Right, beta. So there we go with dopamine receptor agonist. Um, Obviously, you know that what's the problem exactly in the Parkinson's disease? There is reduced dopaminergic activity. So what can we do is, beta, you see this is the presynaptic neuron. This is nice little postsynaptic neuron if you see. And the problem is the dopaminergic neurons are damaged. But what we can do is a little amount of dopamine which is left, little amount of dopamine, obviously out of 100, let's suppose only 20 molecules of dopamine are left. And what we can do is to increase the efficiency of these remaining molecules of dopamine, we can agonize this dopamine receptor, so a little amount of dopamine will be enough to produce the inhibitory effects. Although there is lots of deficiency of dopamine, but if you provide the receptor agonist, then this little amount of dopamine will be enough to activate this receptor and produce the inhibitory activity. The drugs which are the dopamine receptor agonist are number one, the bromocriptine. It is an ergot derivative. Bromocriptine is an ergot derivative. और जो नॉन अर्गट डेरिवेटिव्स हैं इसमें आ जाते हैं रोपिनेरॉल, प्रामिपैक्सोल, रोटिगोटिन एंड एपोमॉर्फिन. तो दो कैटेगरीज की ड्रग्स हैं डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट, एक अर्गट डेरिवेटिव्स ब्रोमोक्रिप्टिन और बाकी नॉन अर्गट डेरिवेटिव्स रोपिनेरॉल, प्रामिपैक्सोल, रोटिगोटिन और एपोमॉर्फिन. कंपेयर टू लेवोडोपा इटसेल्फ, डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है वो काफ़ी लॉन्ग होता है. ठीक है, longer duration of action compared to levodopa, and the initial therapy with dopamine receptor agonist, they are associated with less risk of developing dyskinesia and motor functions compared to levodopa. Levodopa there is high risk. Levodopa जब आप प्रोवाइड करते हो तो एक्चुअली क्या होता है, सडन राइज इन द डोपामिन लेवल्स, तो मसल एक्टिविटी काफ़ी बढ़ जाती है, अपोजिट टू पार्किंसन ना. What is the problem in Parkinson's disease? Muscle rigidity, right? Or we can say bradykinesia. This is the problem in Parkinson's disease, and this is due to deficiency of dopamine, right? This is due to deficiency of dopamine. But what if we provide the levodopa? Suddenly the dopamine will be elevated, right? And all these activities will get opposite. The muscle will get more active. They will not be rigid anymore. So there will be dyskinesia, right? Abnormal movements, increased movements. Okay. So the same is the problem with the dopamine receptor agonist. But compared to levodopa, this risk of producing dyskinesia is less with dopamine receptor agonist. Okay, compared to levodopa. The three dopamine receptor agonist, one the ergot derivative, that is the bromocriptine, and these two, pramipexole and the ropinerol, they are effective in patients with the Parkinson's disease complicated by the motor fluctuations and dyskinesias. Okay, early on levodopa or monoamine oxidase inhibitors may be a really good drug of choice, but later if you have complicated Parkinson's, then you may keep these drugs as a drug of choice. Right, and these drugs are ineffective in patients who haven't responded to levodopa. ये एक बहुत कॉमन सेंस की बात है बेटा. जो पेशेंट लेवोडोपा को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, लेवोडोपा इज इट सेल्फ अ डोपामिन, जो कि लेवोडोपा एक प्रिकर्सर है, चले वो बाद में डोपामिन में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन जब पेशेंट लेवोडोपा को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट को कैसे रिस्पॉन्ड करेगा. ये कॉमन सेंस की बात है कि एक लेवोडोपा है बेटा, आपने दिया और ये डोपामिन में कन्वर्ट हुआ और फिर ये जाके रिसेप्टर पे लग गया और काम हो गया. एक पेशेंट जो डोपामिन को ही रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, लेवोडोपा को, तो इसका रिसेप्टर एगोनिस्ट देने से आपको लगता है वो रिस्पॉन्ड करेगा? मजीद नहीं. सो जो द पेशेंट हु आर इनइफेक्टिव, द ड्रग्स, ऑब्वियसली इफ द लेवोडोपा रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही तो ये ड्रग्स तो किसी काम की नहीं रहेंगी, इनइफेक्टिव होंगी. आप जितना एगोनाइज करें रिसेप्टर को, आपने लेवोडोपा दिया, डोपामिन में कन्वर्ट हुआ, डोपामिन के होने के बावजूद भी पार्किंसन सही नहीं हो रहा, तो फिर इसका रिसेप्टर एगोनिस्ट देने का कोई फ़ायदा नहीं है. राइट बेटा, यू मस्ट लुक फॉर सम अदर ड्रग ऑफ चॉइस. राइट, एंड एपोमॉर्फिन, ये भी एक नॉन अर्गट डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट है. ये इंजेक्टेबल डोपामिन एगोनिस्ट है. अगर आपसे कोई पूछे, सो यू आर यूजिंग द ओरल थेरापी, but what about injectable dopamine receptor agonist?
इट इज़ एपोमॉर्फिन, जो इंजेक्शन की फॉर्म में देते हैं, यूज्ड इन द एडवांस्ड एंड सीवियर केसेस ऑफ पार्किंसंस डिजीज to supplement the oral medications, right beta? Apomorphine is not used in early cases, used in advanced and severe cases. ज़रा इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। पहले अर्गट डेरिवेटिव ब्रोमोक्रिप्टिन और बाकी नॉन अर्गट डेरिवेटिव्स को। राइट बेटा, सो ब्रोमोक्रिप्टिन is an ergot derivative, and you know the mechanism of action there. It's a dopamine receptor agonist, bind with the dopamine receptor and agonize its activity, all similar to levodopa, but the main thing is the adverse effects of this bromocriptine are more common compared to levodopa. The hallucinations after taking this drug, confusion all the times, delirium, nausea and orthostatic hypotension are more common with bromocriptine compared to levodopa. When it comes to dyskinesia is less prominent with bromocriptine, but dyskinesia is more common with levodopa. Don't forget this. Okay. The caution which you need to keep in your mind, that there is a perfect caution. Don't use this drug when there is history of the MI or peripheral vascular disease due to the risk of vasospasm. Bromocriptine has got the quality to produce the vasospasm, vasoconstriction. So be careful if you have myocardial infarction, history of MI or vascular disease in the periphery, any atherosclerosis or arthritis or any other condition producing the narrowing of the arteries. Do not use this drug because it causes vasospasm, right? The adverse effects attached with the bromocriptine, because bromocriptine is an ergot derivative, it has risk of causing, ergot की quality होती है, produces the pulmonary and the retroperitoneal fibrosis, produces the fibrosis, but particularly the pulmonary fibrosis, lung parenchyma की, और retroperitoneal fibrosis, right? Along with these side effects, this is also the problem of bromocriptine, right? After this beta comes the apomorphine, pramipexole, ropinirole and rotigotine. They all are the non-ergot derivatives. They are non-ergot dopamine agonist used for the treatment of the Parkinson's disease. Particularly if we talk about the ropinirole, it is also indicated for the treatment of the restless leg syndrome. Along with Parkinson's disease, ropinirole has, it's been really good for the treatment of this syndrome. We'll talk about this better in the neurology, the restless leg syndrome, right? When it comes to route of administration, what route is preferable for these drugs? Then top two, ropinirole and pramipexole. Ropinirole and pramipexole, they are given orally, but जैसे मैंने पहले ही बताया था, एपोमॉर्फिन और रोटिगोटिन इसको ट्रांसडर्मल और इंजेक्टेबल फॉर्म में भी देते हैं। इंजेक्टेबल ज़्यादातर एपोमॉर्फिन यूज़ किया जाता है, नॉट अर्ली ऑन। इंजेक्टेबल यूज़ किया जाता है सिर्फ सीवियर और लेट केसेस के अंदर, ठीक है बेटा, इस तरीके से। ओके, talking about the apomorphine particularly, the apomorphine, it's used for the acute management of hypomobility of phenomena in the advanced Parkinson's disease. Look, the Parkinson's disease, what is the problem that is always staying with the Parkinson's disease? The problem is the stiffness, rigidity of the muscles, bradykinesia, difficulty initiating the movement, difficulty starting the movement, resting tremors. That means the muscles are very much stiff, very much tight. Okay? In case of advanced Parkinson's disease, मसल इतने rigid हो जाते हैं कि in advanced Parkinson's disease मसल इतने rigid हो जाते हैं कि hypomobility of phenomena हो जाता है, कि बहुत ही ज़्यादा मोबिलिटी कम हो जाती है, hypomobility हो जाती है। इसको hypomobility of phenomena कहते हैं। Early on there is hypomobility but not that severe, still you can use your muscles, but later in the advanced Parkinson's disease there is a hypomobility of syndrome, a hypomobility of phenomena in which the mobility of the muscles is very much reduced. तो उसकी एक्यूट मैनेजमेंट में हम इंजेक्टेबल एपोमॉर्फिन दे सकते हैं, ठीक है बच्चों, इस तरीके से। The dopamine agonists, they delay the need to use levodopa in early Parkinson's disease and may decrease the dose of levodopa in advanced Parkinson's disease। एक समझने की बात है। आप देखें ना बेटा, ये एक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ये एक पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है। फ़र्ज़ करें नॉर्मली 100 मॉलिक्यूल्स डोपामिन के होते हैं। अब चूँकि पार्किंसन डिजीज़ डेवलप हुई, लेट सपोज 20 मॉलिक्यूल बच गए हैं। एक ऐसे तो नहीं होता, लेकिन समझने के लिए 20 मॉलिक्यूल्स रह गए हैं डोपामिन के, ठीक है।
आपने लेवोडोपा फ़िलहाल नहीं दिया, आपने दिया डोपामिन एगोनिस्ट। डोपामिन एगोनिस्ट देने से क्या होगा कि ये आपने डोपामिन एगोनिस्ट दे दिया, ठीक है। 20 मॉलिक्यूल्स भी काफ़ी होंगे इनहिबिटरी इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, आपको शायद लेवोडोपा इस्तेमाल ना करना पड़े। अगर हाँ आप डोपामिन एगोनिस्ट नहीं देते हो तो ये 20 मॉलिक्यूल शायद काफ़ी नहीं होंगे इनहिबिटरी इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए आगे। फिर आपको बाहर से लेवोडोपा देना पड़ेगा, बाहर से डोपामिन आएगा तो इसके मॉलिक्यूल्स 30 40 50 होंगे, फिर वो इनहिबिटरी इफेक्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे। लेकिन अगर आप लेवोडोपा नहीं दे रहे हो, डोपामिन एगोनिस्ट दे रहे हो, अर्ली केसेस में यही होता है। डोपामिन एगोनिस्ट आपने दिया, डोपामिन एगोनिस्ट देने से क्या हुआ, जितने भी थोड़े से मॉलिक्यूल बच गए थे वो काफ़ी होंगे इनहिबिटरी इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। लेटर केसेस में एडवांस पार्किंसन डिजीज़ में जब ये मॉलिक्यूल काफ़ी कम हो जाते हैं, 4-5 रह जाते हैं, तो आपको डोपामिन एगोनिस्ट के साथ लेवोडोपा भी देना पड़ता है, लेकिन कम डोज में, क्योंकि थोड़ा सा लेवोडोपा आएगा वो डोपामिन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा, ये 4-5 से बढ़ के शायद नंबर 10 पे चला जाए, और ये 10 नंबर भी काफ़ी होगा क्योंकि पहले से हमने डोपामिन एगोनिस्ट लगाया हुआ है। तो ये दिस लिटिल अमाउंट ऑफ डोपामिन विल बी इनफ टू प्रोड्यूस द इनहिबिटरी इफेक्ट। आई होप ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात थी या नहीं थी, आसान बात है, लेकिन समझ नहीं आया तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम एनी वेयर, राइट। ओके, सो यही बात है। देखो बेटा, अर्ली केसेस में तो इट डिलेज द नीड टू यूज़ द लेवोडोपा, लेवोडोपा यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं आती। आप डोपामिन एगोनिस्ट यूज़ करें अर्ली पार्किंसन डिजीज़ में, जो थोड़े से मॉलिक्यूल रह गए डोपामिन के वो भी इनफ होंगे इनहिबिटरी इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, एंड यू विल बी हैविंग द हैप्पी लाइफ। लेकिन अगर एडवांस पार्किंसन डिजीज़ है, डोपामिन के लेवल्स बहुत ही कम हैं, तो डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट बेचारा अकेला क्या करेगा। अगर डोपामिन होगा ही इतना कम तो आप फिर बाहर से लेवोडोपा दे सकते हैं साथ में, और उसकी बहुत कम मिकदार, कम डोज रिक्वायर्ड होगी। The adverse effects beta attached with these non-ergot dopamine agonist are hallucination just like the levodopa, insomnia नींद का ना आना, डिजीनेस चक्कर रहते हैं हर वक्त, साथ में जीआई मोबिलिटी कम होती है तो कॉन्स्टिपेशन और ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन की कंप्लेन होती है। आल्सो डिस्काइनेसियाज आर देयर बट लेस फ्रीक्वेंट कंपेयर टू लेवोडोपा। लेवोडोपा में डिस्काइनेसियाज सबसे ज़्यादा होती हैं लेवोडोपा देने से। अगर आप पीछे देखें ब्रोमोक्रिप्टिन डिस्कस किया और ये नॉन रगड डेरिवेटिव्स यूज़ कर रहे हैं, तो दोनों में डिस्काइनेसिया का इतना प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, ठीक है, राइट। ओके, थोड़ी सी फार्म काइनेटिक्स डिस्कस कर रहे हैं बेटा। जो जहाँ तक सिर्फ लिपिनकॉट में दिया हुआ है तो सिर्फ प्रामीपेक्सोल का बताया हुआ है कि ये अनचेंज्ड एक्सक्रीट होती है यूरिन के अंदर, ठीक है। एंड द ड्रग इंटरेक्शंस आर क्वाइट क्लियर। Couple of antibiotics, they inhibit the cytochrome P451A2. It inhibits the metabolism of the ropenerol. Normally the ropenerol is normally metabolized by cytochrome P451A2. The inhibitors of this enzyme are fluoroquinolone and fluvoxamine. Fluoroquinolone and fluvoxamine, they are the inhibitors of this enzyme. Once this enzyme is inhibited, what will happen? ये मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा, सीरम के अंदर इस रोपेनरॉल की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी और इसकी एक्यूट टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, ठीक है बच्चों। एक और हम ज़रा डिस्कस करते हैं आफ्टर डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट, दैट इज़ द एमंटाडीन। एमंटाडीन का क्या रोल है पार्किंसन डिजीज़ में? लेट्स टॉक अबाउट दिस। राइट बेटा, सो द एमंटाडीन, by the way, it is really good drug for the treatment of Parkinson's disease, but don't forget it is antiviral drug. So it is the antiviral drug with anti-Parkinson action. Well, mechanism of action is not exactly, I mean, precisely, clear that this is the single mechanism of action, but it has got several effects on multiple neurotransmitters. I mean, the main problem is in Parkinson's disease, that is the deficiency of dopamine. So what this amantadine do is it increases the release of dopamine, so the problem is solved. Number two thing it can do is it block the cholinergic receptors. In case of Parkinson's disease, there is actually the imbalance between the dopaminergic and cholinergic activity. Dopaminergic activity is reduced and the cholinergic activity is increased. So what this amantadine do is it increases the release of dopamine, decreases the cholinergic activity, restoring the balance again, right? Also it inhibits the N-methyl-D-aspartate, the glutamate receptors, right? So also it can be good for the epileptic attacks as well, seizures. So this is the thing beta, this is the mechanism of action you have to keep in your mind.
The attached adverse effects with the amantadine, the antiviral drug, at high doses it produces the restlessness state of the restlessness, agitation, yeah, state of agitation, feeling patient remains confused all the times, the hallucinations. This is the problem with the levodopa as well. This is the problem with the bromocriptine as well, but more with the bromocriptine. Other side effects, it produces the acute toxic psychosis. I hope you remember that beautiful definition, that is the lack of contact with the reality, right? Orthostatic hypotension, urine retention, and edema in the peripheries, and may produce the reduced may cause reduction in the salivary secretion, leading to the dry mouth. Obviously, this is due to this dry mouth, and urine retention is due to the anticholinergic activity of this drug. Right, beta. Amantadine is less efficacious than compared to levodopa because it is focusing on the release of the dopamine, but obviously in case of Parkinson's disease there is the destruction of the neurons. The dopamine release is not really possible, but still this amantadine tries to get some dopamine out of the presynaptic neurons, but still compared to levodopa this is not really effective. Lastly, the antimuscarinic agents. As you know, but the problem in case of Parkinson's disease is the disturbed balance. Dopamine activity is reduced, cholinergic activity is high. So earlier, what did we see? We tried to increase the dopaminergic activity using levodopa, I mean, MAO inhibitors, COMT inhibitors, amantadine, and all. We tried our best to, increase dopaminergic activity using different drugs. But it's now time that we may, decrease the cholinergic activity to recreate the balance. Obviously, it's going to be less effective than levodopa. It's obviously much, much better to increase the dopaminergic activity rather than decreasing the cholinergic activity. But still, we can do this to recreate the balance. Couple of drugs in this category. The interesting one, the benztropine, and another is the trihexyphenidyl. Okay. We can't produce the antimuscarinic activity if you are suffering from the glaucoma, prostatic hyperplasia, symptoms of BPH, and if there is the pyloric stenosis. So how the heck can you provide the antimuscarinic agent? The antimuscarinic agents will reduce the release of acetylcholine. If the reduce of acetylcholine is there, GI मोटिलिटी और कम हो जाएगी. पहले से पाइलोरस स्टेनोस्ट है, GI मोटिलिटी आप एंटीमस्करिनिक एजेंट देकर और कम कर दोगे तो सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो सकती है. फूड ऊपर स्टे करेगा फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. सिमिलरली ग्लाउकोमा कैन गेट वर्सन. सो इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम एटलीस्ट these three conditions, antimuscarinic agents are contraindicated because all three will get worse. राइट. पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट एंटीमस्करिनिक के आप खुद समझ सकते हैं. जीआई मोटिलिटी कम हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन होगी, सलाइवरी सिक्रेशन कम हो जाएगी, जीरोस्टोमिया होगा, इवन ड्राई आइज होंगी लीडिंग टू विजुअल प्रॉब्लम्स, जीआई पेरिस्टाल्सिस ऑब्वियसली इंटरफेयर होगी, मूड चेंजेस एंड कन्फ्यूजन रहेंगे. ठीक बच्चों, सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ द पार्किंसंस डिजीज. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. बेटा, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी एनी टाइम एनी वेयर. थैंक यू सो मच. क्लास डिसमिस्ड.